Hello students, how are you? Last time we have discussed about electrochemical cell and we have discussed its complete representation, functioning and observations, salt bridge function, all these we have discussed and we have also discussed that there is a voltage in the voltmeter. Now from where that voltage has come, that is due to electrode potential. There are two types of electrodes. One is oxidation, other is reduction, where the oxidation and reduction are taking place are called the different electrodes. So one at which the oxidation taking place, other at which the reduction taking place. Now we are supposing electrode potential. The voltage in the cell is due to oxidation or due to reduction, and we have studied that oxidation and reduction taking place simultaneously. Both are taking simultaneously. It means whether we take oxidation, whether we take reduction, then other process automatically will happen. And potential, or we can say cell voltage, is due to this one. So how, from where the electrode potential or the voltage in the voltmeter has come, that we discussed from that electrode potential. Now we are supposing only a single electrode, and we are supposing a single electrode. So to explain this electrode potential, consider a copper sulfate solution, and it is a rod of copper rod, and it is a 1 mole copper sulfate solution. And during electrochemical cell, we have supposed that an electrode loses electron or other gains electron. So first we are supposing that it loses electron. So when it loses electrons, this type of reaction taking place, that is oxidation. So when an electron loses electrons, then in this case the electrons which copper losing here are on the electrode, and positive part, that is copper 2 positive, goes to the solution, and this is shown by positive, and negative part shown on the electrode and positive part in the solution. And after some time it is observed that there is an attraction between this negative and this positive. There is attraction between this negative and this positive, and due to that reason it is observed that there is no flow of electrons, but it does not happen. And it is supposed that in this case copper and copper 2 positive ions becomes in equilibrium.
यानी कि इसके अंदर लूज और गेन का जो प्रोसेस था वो कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। सो व्हेन सच इक्विलिब्रियम इज, कि जब ये इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, ये कंडीशन जब होगी इसमें इक्विलिब्रियम की, यहां पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, जिसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोड क्या था? जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही है, तो इट मींस इन दिस केस इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। It is called oxidation potential. Similarly, if we suppose reduction, then we get reduction potential. So here we have supposed first oxidation potential. Now based upon this one, so definition, the potential difference between the electrode and its ion. Definition electrode potential क्या होगी? The potential difference between electrode and its ion is called electrode potential. So it is called oxidation potential because we are supposing oxidation. It is called oxidation potential. Now, the value of electrode potential, the value of electrode potential depends upon first nature of the matter, second concentration of ions, and third temperature. These are the three main points on which electrode potential depends. Now, as I have discussed that when we are supposing this is as a oxidation, then it is called oxidation potential. And when we are supposing reduction, then it is called reduction potential. So it is of two types. One is oxidation potential, other is reduction potential. In case of oxidation, a metal loses electrons and
Other example, zinc gives you 2 electrons, or copper gives you 2 electrons. So these are the example of oxidation potential. Similarly, in case of reduction potential, a metal accepts electron and other examples are just like reverse of this reaction, Zn 2 plus 2 positive plus electron gives you Zn, or copper 2 positive plus 2 electron gives you copper. These this is in solid state, this is in aqueous, and similarly this is in solid state, or this is in aqueous. So it is metallics is in the solid state and ions in the aqueous state. So these are the different type of example where oxidation potential and reduction potential with different type of examples. There are a lot of more of examples in which we can explain oxidation reduction, and due to that then having oxidation potential and reduction potential. Now, when temperature is 298 Kelvin and pressure is 1 atmosphere, then when temperature 298 Kelvin, pressure is 1 atmosphere, then it is called standard electrode potential, and it is represented by E नोट. E के ऊपर नोट का निशान. So when temperature 298 Kelvin, pressure 1 atmosphere, it is called standard electrode potential. When oxidation, then standard oxidation potential. When reduction, it is standard reduction potential. Next is measurement of electrode potential. कि कोई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कैसे जो है निकालेंगे, वो हम इसके अंदर लेके चलेंगे. अब जैसे हमने कहा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, they are complementary to each other. Both are taking place simultaneously, and so it means potential due to oxidation as well as reduction is there. We have to know one of the electrode potential, then second electrode potential we can calculate. But as in case of electrochemical cell, oxidation and reduction taking place simultaneously, so it becomes difficult to find out the single electrode potential. So if we have noted the one electrode potential, then other can be calculated. Now, from here, how can we calculate the electrode potential of a single electrode? And for this,
we have to suppose one standard electrode whose potential is supposed to be 0. That is called the standard hydrogen electrode or normal hydrogen इलेक्ट्रोड। इसको SHE या NHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये एक मान के चलते हैं जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो मान के चलेंगे हम। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा? 0। तो अगर ये 0 होगा तो इसके ऊपर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन जो हो रही होगी तो दूसरे का हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज जो मैंने जिंक और कॉपर का आपको सेल दिया था या एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर मैंने आपको जो है कॉपर और सिल्वर नाइट्रेट एग्जांपल का बताया था मैंने वहां पे, तो उनके अंदर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें एक का पता हो तो तभी हम दूसरे का निकाल सकते हैं। लेकिन उस सेल के अंदर जो है उन दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था उसको हमने वहां पे सेल पोटेंशियल कहा था। तो यहां पे इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 मान के चलते हैं। तो इसकी जो है कंस्ट्रक्शन कैसी है, कैसा इसको इलेक्ट्रोड मान के चलते हैं, उसकी मैं फिगर बता रहा हूं इसके अंदर जो है। देन कैसा होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड? इट कंसिस्ट ऑफ ए कंटेनर एंड हैविंग an inverted tube like this and having a ये एक इलेक्ट्रोड हमने दिखाया यहां पे। इसके अंदर जो है HCl सॉल्यूशन है। इट इज ए बीकर और कंटेनर। इट इज ए प्लेटिनम वायर और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, वी कैन से प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, एंड फ्रॉम हियर वी कैन पास हाइड्रोजन गैस। तो इसमें हाइड्रोजन गैस जो है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर और ये सॉल्यूशन होगा 1 मोल का होगा। ये इलेक्ट्रोड मान के चलते हैं हम जो है, जिसको हम जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं हम जो है। तो इसको ये रिपीटेशन जैसे हमने जो है जिंक और कॉपर के अंदर जो है आपको सेलिब्रेशन दी थी, उसी तरह से ये इलेक्ट्रोड रिपीटेशन है इसकी जो है। तो इसको हम इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ in this case it acts as both anode as well as cathode। इसके ऊपर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो सकती हैं। अगर इसके ऊपर जो है हम ऑक्सीडेशन सपोज करेंगे देन हाइड्रोजन गैस जो है इलेक्ट्रॉन लूज करेगी एंड विद द H2 इज देयर, तो 2 ये गैसियस फॉर्म के अंदर और H पॉजिटिव आयन जो है एक्वस फॉर्म के अंदर होंगे। when it acts as a anode or we can say
ऑक्सीडेशन इज देयर, कि अगर इसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही है तो हम इसको इस तरह से प्रिंट करेंगे इसको। when it acts as a cathode, H positive ion accepts electrons to form हाइड्रोजन गैस। ये H+ फॉर्म के अंदर होगा, दैट मीन्स इसके ऊपर क्या होगा, रिडक्शन। तो ये भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर्म में लिख सकते हैं हम इसको। तो इट इज रिडक्शन, इट इज ऑक्सीडेशन। When it acts as a anode, then this type of reaction is there. When it acts as a cathode, then this type of reaction is there. Now, measurement of standard electrode potential। अब किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैसे नोट करना है, देन इसके अंदर जो है जो फार्मूला हम यूज करेंगे इसको ई नोट से मेंशन करते हैं, और ई नोट इज इक्वल टू, बिकॉज व्हेन ऑक्सीडेशन रिडक्शन इज देयर देन इट इज कॉल्ड द कंप्लीट सेल, ई नोट ऑफ द सेल। और ई नोट ऑफ द सेल इज गिवन बाय ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। E node of the cell is given by E node of cathode minus E node of anode। ये फार्मूला आपका काफी जगह यूज होगा, तो आपने सेल पोटेंशियल जहां पे निकालना है उसके लिए आप ये फार्मूला यूज करोगे। तो आपने ध्यान रखना है E node cell is equal to E node cathode minus E node anode, and कंडीशंस क्या होंगी, when E node is there temperature is 298 Kelvin, second pressure is 1 atmosphere, and concentration is 1 molar। ये जब कंडीशन होंगी तब हम कहते हैं E नोट, दैट इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इस कंडीशन के ऊपर ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड का काम करेगा जब हम इसको ई नोट से ट्रेड करेंगे। Now, determination of electrode potential of जिंक, कि जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो इन दिस केस, just like as I have explained the figure of electrochemical cell, we here take one container and other container
and in one container it is zinc electrode, it is 1 mole zinc sulfate solution, it is zinc rod, and in this case I have to suppose just hydrogen electrode, one mole HCl solution, hydrogen gas, 1 atmosphere, and this is platinum electrode, and it is connected through a key and a voltmeter, and it is connected by a salt bridge. ये सेल आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पे जिंक रोड दैट एक्ट एज ए एनोड एंड दैट एक्ट एज ए कैथोड। अब इसमें साल्ट ब्रिज के अंदर पोटेशियम क्लोराइड, इधर करंट का फ्लो होगा, इधर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, ये करंट होगा यहाँ पे। तो पूरा सेल जैसे हमने जो है जिंक और कॉपर का पहले रिप्रेजेंट किया था, सेम उसी तरह से यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन की है मैंने। तो इसके अंदर जो है अब हमें जो है यहाँ पे जो वोल्टमीटर के अंदर जो है जो वोल्टेज आएगी दैट इज ओनली ड्यू टू जिंक, बिकॉज the electrode potential of hydrogen we have supposed 0 because it is a standard hydrogen electrode, or we can call it as normal hydrogen electrode. So electrode potential of this is 0, and here we get the potential only due to zinc container, or we can say only due to oxidation of the zinc. Now in this case, as I have already explained you that E node cell is equal to E node cathode minus E node anode. अब इसको जो है E नोट R माइनस E नोट L भी कह सकते हो। R that for right and L for left. Right hand side this one and left hand side this one. And in this case, the voltage comes out to be 0.76. Voltage comes out to be 0.76. So it means 0.76 is equal to, ये क्या था, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने क्या सपोज किया, 0। तो जब इसका 0 सपोज किया तो ये आ गया ई नोट एनोड, और ई नोट एनोड किसका था, जिंक का। तो जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना आ गया, ई नोट माइनस 0.76 वोल्ट। तो इसमें जो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आया -0.76, क्योंकि इसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही थी तो इसलिए हम कहते हैं इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल।
अब E नोट ऑफ जिंक प्लस 0.76 वोल्ट, ये हो जाएगा इसका रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, दूसरे का रिवर्स है। अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, तो यहां पे साइन का मेन ध्यान रखना है। ये हमने निकाला इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो गया, प्लस 0.76। and in this case so it is called the standard reduction potential, और इसकी सेलर पोटेंशियल क्या आएगी, last time I had explained the how to print a cell, and in this case zinc and hydrogen are the electrochemical cell. So first we take electrode, then single line, then Zn2 positive concentration in 1 molar, and that is double line salt bridge, and hydrogen when reduction taking place on this end, H positive ion, it is aqueous and 1 molar concentration, and single line hydrogen is there in the form of gas, and pressure is 1 atmosphere. Two H positive is there. So it is the cell representation of that I explained. It is oxidation, it is reduction. In this one part is oxidation, other reduction, and from this one electrode potential of this hydrogen is 0, and potential only due to zinc, which comes out to be, when we suppose it is a oxidation potential is minus 0.76, when we suppose it is a reduction potential we suppose plus 0.76.